Welcome dear friends, myself Sandeepan Badelia. Today we will discuss about nitration reaction of benzene. In your examination, question will be asked in this manner. Define electrophile. What do you mean by electrophilic aromatic substitution reactions? Enlist various electrophilic aromatic substitution reactions of benzene and write in detail about nitration reaction of benzene. तो उस क्वेश्चन में आपको क्या आंसर देना है? यू हैव टू गिव डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन यू हैव टू मेंशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उसके बाद आपको बेंजीन की जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो भी, तो उसके एग्जांपल्स देने हैं. एंड फाइनली यू हैव टू राइट इन द डिटेल अबाउट द नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन. तो यहाँ पर हम पहले चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोफाइल की. इलेक्ट्रोफाइल मीन्स व्हाट? दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज. इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो उनके प्रति जो भी आकर्षित होते हैं वो होंगे पॉजिटिवली चार्ज. तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज. तो नेगेटिवली चार्ज के प्रति जो भी आकर्षित होते हैं वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. So definition will be electron loving species which are electron deficient and positively charged known as electrophile. So this is the definition of electrophile. Examples of these electrophiles are, यहाँ पर जो भी पॉजिटिवली चार्ज होंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, that are the examples of electrophile. So NO2 plus, SO3H plus, Cl plus, Br plus, CH3 plus and CH3CO plus. So these are the various examples of electrophile. These all are electro deficient and positively charged. Now we will discuss what is electrophilic aromatic substitution reaction. So in the benzene we know that electronic cloud of p orbital that can be found above and below the plane. तो बेंजीन जो भी रिंग है एज वी नो दैट इज ए फ्लैट, और उसके ऊपर और नीचे p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हम देख सकते हैं. सेकेंड थिंग, द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टेंटली इन द मूविंग एंड डीलोकलाइज्ड. जो पाई इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं, जो भी p ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, that are constantly in moving, वो continuous moving condition में होते हैं, and they are delocalized. तो delocalized का मतलब क्या होगा? Position of pi electrons is not fixed. pi electron की जो भी position है वो fixed नहीं है. So benzene cannot give addition reaction, but it will give a special type of reaction, and this special type of reaction is known as substitution reaction. Substitution reaction of benzene with electrophile, it is known as electrophilic aromatic substitution reaction. तो बेंजीन की जो substitution reaction है इलेक्ट्रोफिलिक reagent के साथ, उसको हम कहेंगे electrophilic aromatic substitution reaction. Now various electrophilic aromatic substitution reactions that can be given by benzene. The examples are nitration, sulfonation, halogenation, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, protonation, nitrosation, डाई-एजो-कपलिंग. ये रिएक्शन कब होगी? जब बेंजीन की ट्रीटमेंट हम करेंगे विद द डाई-एजोनियम सॉल्ट. कॉल्बे रिएक्शन एंड रिमर-टिमन रिएक्शन. These two reaction, Kolbe reaction and Reimer-Tiemann reaction, that can be only given by phenol. फिनॉल के अलावा कोई भी कंपाउंड ये दो रिएक्शन नहीं देगा. Kolbe reaction and Reimer-Tiemann reaction. Next is nitration of benzene reaction and mechanism. That is our main topic. What is meaning of nitration? Benzene, whenever allowed to react with concentrate nitric acid in the presence of concentrate sulfuric acid as a catalyst. तो बेंजीन की जब हम रिएक्शन करते हैं कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ,
कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, ये कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कैटालिस्ट है, उसके प्रेजेंस में जब भी हम रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है, हाइड्रोजन दैट अटैच विद द कार्बन विल बी रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पर बेंजीन के अंदर कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोजन वो रिप्लेस होगा नाइट्रो ग्रुप के साथ। ये रिप्लेसमेंट को हम सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज नॉन एज नाइट्रोबेंजीन। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगी उसको हम बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन, एंड दिस रिएक्शन इज नॉन एज नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। और इस रिएक्शन को हम कहेंगे बेंजीन की नाइट्रेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेंजीन whenever allowed to react with the concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid as a catalyst. So the hydrogen here the hydrogen that is attached with the carbon, that will be replaced by the nitro group. This product is known as nitrobenzene, and this reaction it is known as nitration reaction of benzene. As we know that in the benzene all the hydrogens are equivalent. बेंजीन के अंदर जितने भी हाइड्रोजन है, 6 टोटल हाइड्रोजन है, all the 6 hydrogens are equivalent. So any one of the 6 hydrogen can be replaced by nitro group. तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा ऐसा नहीं है. Any one of the 6 hydrogen can be replaced by the nitro group. तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगी नाइट्रोबेंजीन. This is the reaction of nitration. Next is mechanism. This mechanism involves different 3 steps. First step, it is generation of active nitronium ion. ये जो नाइट्रोनियम आयन है that is the NO2 plus. NO2 plus it is positively charged and electron deficient. So उसको हम बोल सकते हैं that is the electrophile, and that is the key ion for the nitration reaction. So here what will happen in the first step? Concentrate nitric acid and 2 moles of concentrate sulfuric acid that will react with each other and will form hydronium ion, 2 moles of bisulfate ion and active nitronium ion. तो यहाँ पर इस रिएक्शन में, इस रिवर्सिबल रिएक्शन में हमें मिलेंगे हाइड्रोनियम आयन, 2 moles of bisulfate ion and active nitronium ion. And as we know, this active nitronium ion, that is the key ion that is responsible for the nitration reaction of benzene. Second step is attack of active nitronium ion, which is electrophile, to the benzene ring. Here in the second step, the active nitronium ion will attack on the benzene ring, so that by this reversible reaction the benzene carbocation will be generated. Here carbon will be connected with hydrogen as well as the nitro group. Carbon, as the valency of the carbon increased, so this carbon will be positively charged now. So it is known as benzene carbocation. This benzene carbocation it is also known as benzenonium ion. तो इसको हम बेंजीनोनियम आयन भी बोल सकते हैं. This step it is the slower one, so it is a rate determining step. So this step it is also known as generation of carbocation or generation of benzenonium ion. Third step, from the benzenonium ion, abstraction of proton by the bisulfate HSO4 minus to generate the product. तो यहाँ पर क्या होता है, in the third step, abstraction of this proton by this bisulfate ion, so that as the proton is abstracted, so this will be liberated as H2SO4, and the carbon that will now be connected with the nitro group.
So the generated product, now it is known as nitrobenzene. This product, it is known as nitrobenzene. This step, it is the faster one. Here we are getting H2SO4 back after the reaction. तो कैटालिस्ट उसको ही हम बोलते हैं the compound that does not take part in the reaction but increase the rate of reaction. After the reaction we can get back in the unchanged form. So this is the mechanism of nitration reaction. Now, as we have discussed, this is a benzene carbocation. It is also known as benzenonium ion, to which nitro group it is attached. What is the actual structure? It is the hybrid structure of number 1, number 2 and number 3 structure. These are the three structure, number 1, number 2 and number 3. In this benzenonium ion, the carbon, it is connected with hydrogen as well as a nitro group, and one positive charge is present. Here the position number will be, this carbon is number 1, this is number 2, number 3, number 4, number 5 and number 6. Here in the structure number 1, the double bonds are present at third position एंड फिफ्थ पोजीशन. तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है ये थर्ड और फोर्थ के बीच में है, तो यहाँ पर मिनिमम नंबरिंग जो भी है वो हमें कंसिडर करना है, मैक्सिमम नहीं कंसिडर करना है. सो 3 एंड 4, सो वी विल कंसिडर नंबर 3. यहाँ पर डबल बॉन्ड दैट इज प्रेजेंट बिटवीन 5 एंड 6, तो मिनिमम नंबर हमें कंसिडर करना है, दैट इज नंबर 5. सो डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट at the third and fifth position and positive charge that is present at second position. In the structure number 2, the double bonds are present in between second and third. So यहाँ पर minimum that means number 2 consider करना है, and in these between number 5 and number 6, so minimum that is number 5 हमें consider करना है. So double bonds are present at the second and fifth position and the positive charge that is present at fourth position. In the structure number 3, the double bonds are present in between second and third position. So यहाँ पर हमें minimum number that is number 2 वो consider करना है, और यहाँ पर in between number 4 and number 5, so minimum that is 4 हम consider करेंगे number 4. So double bonds are present at second and fourth position and positive charge that is present at the sixth position. So these are the three hybrid structure, and the benzenonium ion, it is the hybrid structure of these three structure 1, 2 and 3. So this can be represented more likely by the structure number 4. In these, the benzene ring to which carbon is connected with hydrogen and nitro group, and the positive charge that has been written at the center, and the dotted lines indicates the rotation of double bonds or rotation of pi electrons or delocalization of pi electrons. So this is all about nitration reaction of benzene. So whenever question asked in your examination, you will mention all this thing. This is important question for your examination. Prepare well. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड टू गेट लेटेस्ट वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल. माय चैनल नेम इज संदीप एन बडीलिया. We will meet again in the next lecture with another topic. Goodbye. See you again.